for giving me this opportunity to come here and speak to you all. I am Dr. Mehak Segan. I am a consultant to NADA India Foundation. I am an assistant professor at Amity Institute of Public Health, Amity University, Noida, and I am also the public health advisor for Hamjoli Foundation. So today we are going to talk about something which is prevalent हर जगह पे हमारे सोसाइटी में. There's, I don't think so many of you are sitting here who can tell me that मैम ऐसा नहीं होता. Underage drinking is something which like Aditya was saying, हमने देखी है, हमने कभी कभी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया है या हमारे सामने हमारे फ्रेंड्स ने किया है. So how many of you are below, anybody who's below 25 years here? Oh, okay. A lot of you are below 25 years. So you should specifically listen to this presentation and this talk, because this talks about even though underage drinking or drinking as such has been given a lot of party atmosphere and has been laid emphasis. किसी भी social media platform पे चले जाओ, किसी भी OTT platform पे चले जाओ, पार्टी करनी है, रिलैक्स करना है, एंजॉय करना है फ्रेंड्स के साथ. दैट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? ड्रिंकिंग. ठीक है. सो वी जस्ट गोना टेक इट. सो अंडर एज ड्रिंकिंग के बारे में जब हम बात करते हैं, सो व्हाट इज द इशू एट हैंड? सो अंडर एज ड्रिंकिंग इज समबडी is that when someone who is below the legal drinking age engages into underage drinking alcohol. अब ये जो legal drinking age है ना, ये बहुत ही गड़बड़ टर्म है. बिकॉज अब लीगल ड्रिंकिंग एज क्या है? 18, 21, 25, 28, 30 या 50 साल. So many youth, because I interact with a lot of youth and I like talking to them and I like listening to their ideas. So the first thing that they tell me is, ma'am, drinking age should be 18 years. Now, आप में से भी कोई ऐसा सोचता है that the drinking age in India should be 18 years because बहुत सारी जगहों पे है 18 years. Is there anybody who thinks like that ma'am we should like ये 21 years भी क्यों करा, इसको तो सीधा 18 years कर सकते हैं. जब मैं 18 years पे अपनी गवर्नमेंट चूज कर सकता हूँ, तो why can't I indulge into drinking? That is a simple logic and notion that everybody has. That is because we will be seeing it in the subsequent slides that drinking का voting या हमारी maturity से कोई लेना देना नहीं है. Alcohol is something which reacts with our body in an extremely different way than what we perceive it to be. So अगर हम global alcohol consumption देखें, तो आप देखोगे इंडिया बहुत ही नेफेरियसली सेकंड पोजीशन पे आ गया है. ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स हमारे यहाँ पे 37% रेज हुआ है इन अल्कोहल कंजम्पशन. सो हम किसी और में तो सेकंड नंबर पे अभी नहीं पहुंच पाए जिसमें हमें पहुंचना चाहिए. ऑन ऑल द सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ऑन ऑल द डेवलपमेंट इंडिकेटर्स दैट वी शुड बी डूइंग, बट वी मैनेज टू रीच ऑन द ग्लोबल अल्कोहल कंजम्पशन इंडेक्स एट द सेकंड नंबर. And because so many of you are like youth are there, so we call you all the Youngistan of our country, right? Now, unfortunately, the Youngistan is raising a toast on all occasions, at all hours, and unfortunately at every unexpected place. There has been a drop. So you see a bunch of numbers here. मैं वो सारे numbers आपको नहीं बताऊंगी. My presentation is available with Sudisha. She can share it with you all. But the stats that you see here is that there has been a decrease. There has been an increase in the age of drinking. जो पहले 28 साल था, जो 25 साल हुआ, जो 20 साल हुआ, वो 2012 में 13 साल है. 13-year-old children are also indulging into alcohol. So that means some of your cousins, some of your baby sisters, baby brothers. So you can have like you don't even know who's indulging into alcohol. If you look at the stats given at the right hand side, that they show a bunch of numbers again. But मोटी बात ये है that alcohol consumption is on a rise in India. Secondly, alcohol consumption in underage population is on a rise of India. So why is so much of focus on underage? In the world, India has 365 million young population in our country. This which is the highest in any given country. That means पूरे वर्ल्ड में से हमारे पास सबसे ज्यादा यंग लोग हैं. तो अगर ये सारे यंग लोग अंडर एज ड्रिंकिंग में इंडल्ज कर रहे हैं और दे आर लाइक टेकिंग अल्कोहल, सो व्हाट इज गोइंग टू बी देयर हेल्थ स्टेटस? Why? Because their health status is directly related to what? The productivity of our country. So what is happening with the youth of our country? So you all are sitting here, you all have participated so actively in the 2-day conclave that NADA India has organized.
So so imagine people who are indulging into underage drinking. So what is going to happen? Again, this is just another stats, and I think किसी ने पिछले सेशन में कहा था कि because Google बहुत सारे अपने एक्टिविटीज भी चलाता है, so that you know they are able to compensate in some way or the other. Similarly, इंडिया का जो सबसे स्पिरिट मार्केट है, जो हमारी इंडिया की स्पिरिट मार्केट है, उसमें है आपका डियागो. So if you look at that, Diageo pledges 5 million pupils, students, teachers को reach करना चाह रहा है to ensure कि underage drinking नहीं हो. Why are they doing that? Somewhere down the line they're guilty. Why are they guilty? Because they are responsible somewhere to encourage our youth to pick up a glass in their hand. So it is both ways. So now imagine if Diageo, which is one of the largest spirit manufacturer, अगर वो recognize कर रहा है that underage drinking is harmful, so why are we not recognizing? Now I'm not going to go into the debate that whether drinking alcohol altogether is good or bad, but I am going to tell you that you have to make safer and responsible drinking choices. So when we set an age limit, there has to be a medical reason behind it. So उसके पहले ये जानना जरूरी है कि what is luring the young people of our country to drink or to take alcohol. बहुत सारे reasons हैं. All these reasons you must be knowing. सबसे पहले peer pressure. ये तो हर नेगेटिव चीज का एक जो सबसे पहला पॉजिटिव फैक्टर है वो क्या है? peer pressure. मैंने किया, तूने नहीं किया, तूने किया, उसने नहीं किया, चल हम सब करते हैं. Right? So this is one of the first thing that happens. And you know, Delhi NCR के बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं. I am somebody who's grown up in Delhi. So I've seen, so I did entire schooling from Delhi, and I've seen how easy it is to procure alcohol. How easy it is to not get your IDs checked at majority of the upcoming restaurants and pubs and bars. How easy it is to go with your friends and just walk in and just order whatever you want to order. What are the repercussions for this? The repercussions are that you are putting inside your body a substance which is so harmful and so detrimental that you cannot even imagine. So it is not something that just imagine all the public health experts all around the world are saying underage drinking is bad. Has to be a fundamental reason for it. So that's why nobody says that stop drinking altogether. What do they say? Safer and responsible drinking choices. Wait till you're old enough to actually understand what's happening. Wait till you're old enough to actually understand the choices that you're about to make, right? So one is the peer pressure, environmental influences, films, TV, OTT platforms. कोई भी OTT platform चला लो, just watch anything, you will have youngsters just partying, smoking, taking drugs, indulging into alcohol. So as a consumer, what am I seeing? I'm a 16-year-old girl who, if stressed or has had a fight with her parents, or is not doing well in school, or is not liked by anybody, what is the easiest option? Let me go out with my friends and have a drink. That is what my OTT platform is showing. So we do get influenced by that. Even today, when I'm watching something which is my age appropriate, that is something that strikes a balance with me and says that okay, so ये हो सकता है कि मैं इसको कर सकूं. So imagine a young mind of 16 years, 17 years, who is so much involved with the character that they are seeing, that जो भी character कर रहा है आप वही सब चीजें कर रहे हो. So environmental influence is second factor which can lure a young person to drink. Then you have to cope with an underlying problem. Now this underlying problem can be anything. This can be something as simple as you not performing well in schools, or it can be as simple as you're not getting along with your friends or your parents, or some underlying mental psychology, pathologically you're not feeling well. You're feeling depressed, you're feeling stressed, you're feeling anxious. So आपके लिए क्या है? नहीं anti-anxiety medications नहीं. मैंने movie में देखा था. Let me just have a small quantity of alcohol. I'm going to be all right. I've had a fight with my best friend. I'm not feeling nice. So let me just go ahead and do a Friday night partying because it's so easily available. Let me just just dissolve all my worries away. Next morning everything is going to be okay. It isn't like that. So alcohol is not working to dissolve your worries. What is alcohol doing? Alcohol is just making you so numb that you're not able to think. Rationally आप सोच नहीं पा रहे हो. So when you have alcohol, your entire brain is affected.
एंड जो एक कोर्स है जो नाडा ने बनाया है, द वी लीड एकेडमी कोर्स ऑन अल्कोहल एंड अल्कोहल अब्यूज, उसमें यू विल अंडरस्टैंड इन सो मच डिटेल कि ब्रेन पे कैसे काम कर रहा है. हमें सिर्फ उसका आउटकम दिख रहा है. Anybody who's had an alcohol drink is not able to walk properly. Now imagine that part of your brain has stopped working, which is doing what? Helping you walk properly. अल्कोहल पिया, कुछ याद नहीं है अगले दिन. ये किसके साथ होता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस पेशेंट्स के साथ होता है. पेशेंट जिनको कोमा में जो चले जाते हैं उनके साथ होता है. तो अल्कोहल ने सेम इफेक्ट प्रोड्यूस किया है जो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के पेशेंट के साथ हुआ या जो पेशेंट कोमा में चला गया उसके साथ हुआ. आप अगले दिन सुबह उठे हो, यू डोंट रिमेम्बर एनीथिंग दैट हैपेंड लास्ट नाइट. इज दैट अ गुड थिंग? नो. As youngsters, you might think that it's a good thing because I have resolved all my worries. But most of you should think it like this, that what harm is it doing to your own body? What harm is it doing to your brain? So there is a research which says that having alcohol does such irreparable damage, even with one drink, which cannot be reversed ever again. So it's not like कि मैंने तो सिर्फ एक ही ड्रिंक लिया या I only have 5 or I very rarely drink once in a while with my friends. No. Even one alcoholic drink, that is 30 ml of alcohol, can cause irreversible damage to your brain within 7 minutes. That is the research which says that. Okay. So then the last is to appear older and more independent. अब ये issue तो with every youngster है. You guys want to be very mature very quickly. You want to have that sense of independence. So if you want to have that sense of independence, start working towards building of the society. You have such a lovely network here at NADA. They want to involve you into making your life mean something. So if you want to be independent, then come here, become a peer leader, rather than doing something which is going to harm your body and make an irreversible change which you cannot reverse back ever. So if somebody is drinking, there are 7 warning signs of underage drinking. There are going to be mood changes, there are going to be school problems, there are going to be rebellion, there are going to be change of friends, there is going to be a physical or a mental health problem, and then the last is nothing matters attitude. Now, all of these signs are part of adulthood also, growing up also. अगर कोई teenage years में चला जाए वापस से, let's go back to our own teenage years, we did all of this. We had random mood changes, we had issues at school, we probably had changed a group of friends, we had all of that. But why is this important to study? It's important to study because if we have somebody who's underage and having all of these signs, displaying any of these signs, please ensure that you're taking care of that. Ensure that the person is not indulging into underage drinking. Because what's going to happen? These are your physical effects of alcoholism. बॉडी का एक भी ऑर्गन ऐसा नहीं बच गया जिसका अल्कोहल पे इफेक्ट नहीं हो रहा. If you look at this, tell me, is there any part of the body which is left which is not getting affected with alcohol? No. You talk about brain, so there can be dementia, memory loss, mood swings, high blood pressure. Talk about kidneys, you have high risk of kidney stones, kidney failure. Stomach में बात करो, gastritis है, vomiting है, bones, liver, muscles, lungs, every part of your body is affected when you have alcohol. So that's how you have potential health impacts also. So decision making goes away. That is when people who indulge into alcohol, they are more prone to high risk behaviors. Now what are these high risk behaviors? Drunken driving, one of the potentially most biggest cause of road traffic accidents in our country. Drunken driving. So you will not indulge into drunken driving if you are in your senses. You will only indulge into drunken driving if you are not in your senses. You cannot, your brain has stopped working. Your brain which tells you, like my brain is telling me something right now that I have to speak here, so I have to stand properly, I have to probably explain in a better way. But if I am not in my senses, I will do whatever I want to do right here. Right? So if your brain stops working, that is when you lose your decision making power. You lose your memory. So if you can see, you have like an entire short term and a long term effects, potential health impacts of drinking alcohol. Why do we particularly say that alcohol is bad for people who are underage? Because the brain of a teenager is not fully developed till they are in their mid-20s or late 20s.
तो जो हमने 25 ईयर एज लिमिट लगाया है, that's what we are asking our government to do, that please increase the age back to 25 years, which it was originally. Why do you have to bring it down to 21? The 25-year age limit is because till the time we reach 25 years, our brain has not yet fully developed. Only those portions have developed which will help us in function in day-to-day lives. जो हमारा ब्रेन का वो वाला पार्ट है जो डिसीजन लेता है, जो वो पार्ट है जो हमें रोकता है कोई गलत चीज करने से, वो 25 years के बाद बनता है. So that's exactly why we say that the brain of a teenager does not fully develop till they are in their mid-20s or late 20s, and because the brain is still developing, what's going to happen? That they will, if they are consuming alcohol, their brain is going to have irreversible damage, which I was just telling you about. And then the earlier a person starts drinking, the more likely the person will develop serious problems with alcohol. So if you indulge into safer and responsible drinking, like in your late 20s or early 30s, you know that by that time you started working, you know how you want to be, how your body is, you like just occasionally socially drinking, you are less likely to have alcohol abuse disorders. The earlier you start drinking, the more likely you are you can have your alcohol disorders, right? And so teen brains are more vulnerable to alcohol because obviously they can cause short-term and long-term harms. Adolescents need only one drink, half as much, to suffer the negative consequences. Which means a 30-year-old person can have a 30 ml of alcohol and have the same kind of a effect, but a teenager, a 15-year-old, will just need 15 ml of alcohol to have the same kind of negative effects. Now, obviously, then they perform worse in school, they have increased risk of social problems, depression, suicidal thoughts, and they are more prone to issues related to violence. Either they can be the victim or they can be the perpetrator. So it works both ways, right? Now, this is what I want to talk to you all about, the laws related to underage drinking. We have a couple of laws available. The first is obviously the Juvenile Justice Act that we have. Anybody heard of this act? What is this? थोड़ा सा ऐसे ब्रीफ में एक लाइन में बता दो. ओके, चाइल्ड से रिलेटेड ना दो मेनली रूप से दो है, जेजे और पॉम. ये दोनों चाइल्ड के जो राइट्स है ना उसको संरक्षित करने के लिए, अगर और टोटली हिंदी में बोले तो ये बनाए गए. इसके लॉट्स ऑफ टर्म्स हैं कि जो क्राइम बच्चे कर रहे हैं और जो क्राइम बच्चों पे हो रहा है, दोनों के लिए अलग अलग लॉज है. तो ये एक ब्रॉड टर्म है, अगर जाएंगे तो बहुत टाइम लगता है. और बेसिकली मैम जो 18 साल से कम जो बच्चे क्राइम करते हैं उन बच्चों को एक रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करने के लिए है. तो अल्कोहल से इसका क्या लेना देना हुआ? फिर मैंने अल्कोहल के लेक्चर में क्यों इंक्लूड किया? बिकॉज जेजे एक्ट के अंतर्गत अगर हम किसी भी अंडर एज बच्चे से अल्कोहल या कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस या तो इधर से उधर करवा रहे हैं या उनको फोर्स कर रहे हैं लेने के लिए, तो यू कैन बी इम्प्रिजन्ड बाय लॉ. सो जैसे पीयर प्रेशर में होता है ना, पी लो यार कोई बात नहीं, थोड़ा सा पी लो, दैट पर्सन इज अंडर एज एंड आपने उसको फोर्स किया to consume any narcotic substances or any toxic substances or any alcohol related substances, you can either be imprisoned by law or you can have a hefty fine to pay, and that imprisonment can go on to 7 years also. So no selling of any narcotic products or alcohol products to underage children, no forcing them to drink. That is why we have this JJ Act in our country. Obviously it's a very big act, but मैंने सिर्फ अल्कोहल से थोड़ा सा उसको रिलेट करके बताया. That's why this act is there in our country to protect the child rights. Second is new excise policy. इसके बारे में बहुत ही बात हो रही है. क्या ये एक्साइज पॉलिसी दिल्ली से क्या इसका ताल्लुकात है? Anybody can tell me? क्या ये एक्साइज पॉलिसी क्या किया इसने आके? आज दिल्ली गवर्नमेंट ने ना नई एक्साइज पॉलिसी के लाई है, अभी ड्राफ्ट लाई है, जिसके थ्रू रेगुलेशन जो एल्कोहल का दिल्ली में उसको चेंज करना है और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है गवर्नमेंट के लिए. और गवर्नमेंट ने ये सबसे बड़ी गलती की है कि बस रेवेन्यू पे ही फोकस करा है. प्राइवेट वेंडर्स बढ़ा दिए हैं, सरकारी खत्म कर दिए. मतलब अब और भी चकाचौंध में शराबें मिलेंगी. वैसे एरिया जहाँ बहुत सही बात है. और वो एरिया जहाँ पे एल्कोहल का दुकान नहीं है
वहाँ भी अपनी दुकान खुलेंगे। जैसे बहुत सारे दिल्ली के इलाके में पुरानी साइड में है ना, बहुत कम दुकानें थी, बहुत इवन रेस्टोरेंट्स वगैरह को भी सर्विस बहुत Permission. हाँ रेस्टोरेंट को पहले इतना इजी नहीं था किसी भी रेस्टोरेंट में टू सर्व अल्कोहल, नाउ बिकम वेरी इजी। बट मैं इस पूरी एक्साइज पॉलिसी से बाकी सब कुछ, आपको रेवेन्यू जनरेट करना है, आपको नए प्लेसेस पे अलाउ करना है, वो दैट ऑल इज योर प्रेरोगेटिव। My only concern is why to reduce the age of drinking alcohol. When it is fixed at 25 years, there was a reason. So, since history, whenever something is done, so a lot of doctors, a lot of public health professionals, a lot of social workers, a lot of common people, they all come together and decide something. तो जब ये चीज डिसाइड हुई होगी तो कुछ एक इसका लॉजिकल रीजन होगा टू फिक्स इट एट 25 years. मुझे तो लगता है ना रेवेन्यू हमारे मैं उसकी बात पूछने नहीं पूछ रही हूँ। हमारी कंट्री की जो है ना यूथ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, 365 तो million. रेवेन्यू बढ़ाना है तो कंज्यूमर बढ़ाना होगा ना, और कंज्यूमर को बढ़ाने के लिए 25 से 21 कर दिया जाए। वैसे ये कंज्यूमर थे पहले भी, मतलब बहुत नहीं भी होते हैं और होते भी हैं लोग कंज्यूमर, बट वो कंज्यूमर अब legal consumers बन होती गए। है, अब लीगल कंज्यूमर्स बन गए। Earlier they were all so even it, and I think मेरी initial first to slide मैंने दिखाया था how easy is it to consume alcohol and buy alcohol. तो अपने टाइम के बारे में बात करें, when I was in school, how easy it was that time. So अब तो it's like online deliveries are happening. You आपने अपने nearest वो जो ठेका वाला है उसको कॉल किया, वो आपके घर भिजवा के जाएगा with 100 rupees delivery charge. This is how easy it has become. I was shocked. I did not know this. I have friends in Gurgaon who told me this, that this is what happened. वो नहीं, उसको फोन कर दो, वो घर पे दे जाएगा with 100 rupees extra charge. So what is happening? Are we ordering pizza or are we ordering alcohol? This is not the kind of environment that we would want our youth to grow up in. And consumer बढ़ाना, that is different. I'm not going to talk about the sales or the market perspective. But what we can do is, हम उन सबको तो नहीं रोक सकते, but we can empower our own selves, and that is exactly what I say in any of my lectures, in any of my session, कि मैं किसी और को नहीं बदल सकती, मैं अपने आप को बदल सकती हूँ. I can empower myself and I can try to empower each one of you who is below 25 years sitting here to make responsible and safer drinking choices. To not get into the peer pressure, to not get into the societal influences, to not get into all of the factors which are there, which encourage a person to drink. The third is the Indian alcohol policy. Do we have an Indian alcohol policy? No. Why not? हमारे पास we have a policy and a program for everything. You name it and we have a policy. बड़े बड़े डिजीजेस के लिए है, कार्डियोवास्कुलर, स्ट्रोक, वी हैव अ पॉलिसी फॉर टोबैको, कॉटपैट है, वी हैव फॉर मेंटल हेल्थ, वी हैव फॉर ऑल द इन्फेक्शियस डिजीजेस, मलेरिया, जॉन्डिस, सबके लिए हमारे पास पॉलिसीज है. तो व्हाई नॉट फॉर अल्कोहल? व्हाई डोंट वी हैव इंडियन अल्कोहल? बिकॉज़ अल्कोहल अभी के लिए स्टेट कंसर्न है अभी तक. एग्जैक्टली. तो बिकॉज हमने उसको सेंट्रल प्रेरोगेटिव में नहीं डाला. जब कोई चीज सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेरोगेटिव में नहीं आती, it becomes a little difficult to make any common policy or a program for that. Like health is the prerogative of state. If you remember, I keep telling you. That's why every state government does its own way of developing health in their own sector. But similarly, we need to bring in alcohol under the domain of the central government so that we can have a common alcohol policy which envisages everything that we want them to have, like the legal drinking age. आज की डेट में इंडिया में we have some states where alcohol is completely banned. Which are those states? Completely banned है. On the other hand, दिल्ली है जहाँ पे इतना अल्कोहल हो रहा है कंज्यूम, अंडर एज ड्रिंकिंग में हो रहा है, इलीगल अल्कोहल प्रोक्योर हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है अल्कोहल की, स्प्यूरियस अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. But there are states where you have alcohol completely banned. So this is not something where you can run a country, or you have to have common policies. अगर हम किसी भी और चीज के बारे में बात करें, we have like common policies. हमने वोटिंग की एज में तो ऐसे नहीं रखा ना कि आप दिल्ली के हो, आप चलो 17 साल पे कर लो, आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, चलो आप ऐसे करो 20 में कर लो. या मैरिज की एज हमने ऐसी रखी, वो भी हमारी सारी कॉमन है. So because these things are associated with youth, that's why I gave you this example. So why not something regarding alcohol that is also associated with youth? तो जब हमने वोटिंग कॉमन रखा है, मैरिज का एज कॉमन रखा है, why aren't we having any common policy for
for alcohol, and that is exactly why we need your support. This will come when the youth is involved, when youth gets up and tells the government that we want a common alcohol policy, because it is not affecting us, it is affecting you. You're the youth. It is affecting everybody who is coming under the age group of 15 years to 30 years. Because it's all of these decisions that we're talking about today, it's not going to affect us in any way. It's directly impacting you, your future, and the future of your country. So you need to now get serious about this. Get involved. See how you can be involved. You have one of the platforms that we have here is getting involved in NADA. So I'll just quickly tell you the key components of strategies for preventing underage drinking. So we have a lot of different strategies. I have tried to summarize it under the school strategies, family strategies, community strategies, and extracurricular strategies. So school level पे क्या कर सकते हैं? Why do we have to involve school with this? Because the earlier the age of initiation of alcohol happens, the more dangerous alcohol becomes for you. So that is why we want to involve school into this. That's why you as youth leaders should get in touch with all your nearby schools or the schools that you passed out from. Tell them that, ma'am, we want to come in and take a lecture. We want to come in and take a lecture in my school. Tell them about the harmful effects of alcohol. Tell them, because harmful effects of alcohol के बारे में जब बात होती है, so everybody thinks liver खराब हो जाएगा. अरे liver तो देख नहीं बात में जब होगा खराब. That's what happens. They do not understand that alcohol is affecting head to toe. आपके brain से लेके आपके toe के fingernail तक alcohol affect कर रहा है. So this is what you have to go out there and educate them. So you have a lot of school strategies. All of these strategies have been explained very deeply in the course that NADA has developed, the We Lead course, because it's just an overview. And the second is your family strategies. So what are your family strategies? That you need to have your parental involvement is important. Now why do we want to involve parents into something? Because the more open communication we have with our family. Now I want to bring something into this, I want to say something. There's so many of our families and parents, what they do. I'm not saying whether it's right or wrong, but that's a way of their own parenting and their way of own managing their children. Then when they become a certain age, like 19, 20, 21, the father or the mother will make us, you want to have alcohol? Let's all sit together and have alcohol. ऐसा होता है? Yes, very common. The father will say, okay, and especially this becomes a bonding moment between a father and a son. That बहुत सारे I have friends who say that I had my first drink with my father, with my dad, because I come from an army background. So वहाँ पे तो वैसे भी this thing is a little more open. So वहाँ पे तो it's not like under the closet. So it's a very feeling of very pride that my friends say that I had my first drink with my dad when I was 19. Now as parents, do we realize that what we are sending, what kind of message are we sending to our children? Drinking is very normative now. The minute you share something with your child and say, have a drink, it's okay. But सुनो ऐसा करो कि सिर्फ घर पे पीना, बाहर नहीं पीना. What kind of a message is that? Isn't that a mixed signal message? I can have alcohol, but only at home. Why? This is a mixed kind of a message that you're sending out to your children. So I'm not saying that this kind of a parental strategy is right or wrong, but this is what we need to have as parents, that we need to ensure that we are sending out proper messages to our children. We are having an open communication with them. A lot of families have bars set up in their home, right, with alcohol displayed in beautiful bar cabinets and with beautiful glasses and with all the accessories that you have, and then you have guests coming over, your father or your mother will set up everything nicely. So this is a kind of message. What kind of a message is going to the student, to the children? That alcohol is used for social conditioning. Alcohol is used when you're trying to have fun. My parents have friends over, they're having alcohol. ठीक है यार, बहुत बढ़िया, मेरे भी तो बहुत सारे दोस्त हैं. पापा मम्मी बाहर जा रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स आएंगे, I can also have alcohol. So then as parent, will you be able to tell your child don't have alcohol? No. So if you are belonging to a family which has alcohol on very social occasions, then try establishing an open communication with them.
Like try telling them the harmful effects of alcohol. Try telling them that alcohol is associated with safer and responsible drinking choices, not to be indulged in something at a very young age. So this is a kind of, that's what we discuss in family strategies in the course, that if you enroll, all of you listen more about this in your course. And then the third we have is your extracurricular strategies. Now this is where each one of you come into picture. Youth leadership, intensive programs, incorporation of skill building setup, supervision by positive adult role models. My request to each one of you, have role models in your life. You can look up to anybody. I am not here to tell you that you have to look to Swami Vivekanand or Gandhi ji or Jawaharlal Nehru. No, I am not saying that. Look up to any person living or dead, but have positive role models in your life. Aspire that you would want to be like them someday. They can be your parents, they can be somebody from your family, they can be a political figurehead, they can be anybody. But you have to have positive role models, so that every day when you wake up, you are able to realize that this is how I want my life to be 10 years down the line, 5 years down the line, right? Then you need, and I have already emphasized on how important it is to have youth leadership. Then the last strategy that we talk about is your community and your policy strategies. This is where we talk about excise taxes, like he was telling that taxes raise करें, legal drinking age को वापस से बढ़ा के लेके आए, and we need citizen action to reduce commercial and social availability of alcohol. इतना easily available है alcohol, we need to put a check on that. जब हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए कोटपा एक्ट के अंदर, भी से दैट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के आसपास नहीं, देयर शुड बी नो वेंडर सेलिंग टोबैको, पर क्या हमने कभी ऐसा कुछ अल्कोहल के लिए सोचा है? अल्कोहल कहाँ मिलना चाहिए और अल्कोहल कहाँ नहीं मिलना चाहिए? कहीं रोड पे जा रहे हो तो दिख जाएगा वहाँ पे बड़ा देयर इज अ शॉप व्हिच इज सर्विंग अल्कोहल. हैव यू एवर थॉट ऑफ कि which are suitable places for getting alcohol and which are not suitable places for getting alcohol? Because alcohol has become so easily available, and obviously there is a revenue associated with it. Like we all know जितना alcohol ज़्यादा बिकेगा उतना revenue ज़्यादा आएगा. So that is something, citizen action is required. We need the legal drinking age back at 25, and we need excise taxes more. So how can you also, World Health Organization says that alcohol underage करने के लिए we need participation of young people. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, पब्लिक हेल्थ वर्कर्स, ये सब तो कर लेंगे जो इनको करना है, but the young people, that is you all sitting in this room, you need to participate and ensure that your generation and the generation which is coming after you is not getting affected with underage drinking alcohol issues. So you can have a variety of peer education programs. One of the peer education programs that we have here at NADA is the one that Aditya just told you about from the V-Lead. And then you can have community young leaders in your own community. कोई official organization नहीं है, you can just have a alcohol prevention task force. Very simple, right? So you don't need something which is out of the ordinary. The solution is right in front of your eyes. And if this is an issue which you're passionate about, you want other people to do not consume alcohol when they're underage. So join hands together, find common people, go on social media, form groups, form Instagram pages, start working towards it. And just like become a youth leader, reach out to your local NGOs, have linkages with youth councils like we're doing today. So the first step you've already taken. You all are attending the youth conclave. So already that first step has been taken. Now just keep working towards it. Do not let this be a standalone decision. When you're after finishing the conclave, when you're going back home, keep working towards building up your connections. Keep working towards trying to find out like-minded people, right? Try to establish a national task force if you can. Like, it's very easy. First in your state, then 2 states join hands together, then 3 states join hands together, and then slowly build up a national task force, right? So this is the module that we have, the prevention of underage alcohol drinking and good health promotion. This module is designed, so it's a very interesting module. We've made programs different for students, different for teachers, different for social workers. So it's not like we've brought in all of them together at one place. It is need specific. So because of you, so it's a program which is designed from
age group of 15 years to 30 years. That is, it's different for them, it's different for the teachers, it's different for your social workers, right? And what is it going to help you? It's going to help you in like, you know, understanding the risk of underage drinking and substance abuse, mitigating the effects, and empowering you to make safer and healthier drinking decisions. This is how the program portal looks like. I think Sudiksha can all give you more information on that. Right? So this is what I just wanted to end my talk with, that have safer drinking choices. So you have SAFER, strengthen restrictions on alcohol availability. Alcohol को इतना easy commodity नहीं बना, वो दाल चावल नहीं है कि हमने उसको हर जगह बेचना शुरू कर दिया. Right? Advance and enforce drink driving counter measures. इंडिया में ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए पकड़े गए तो बाकी चालान दे देंगे, 500,000 रुपये निकल जाएंगे बाहर, फोन करवा देंगे किसी से. How difficult is that? I know so many people. रात में 2 बजे पकड़ा गया, आपने 2,000 रुपये पकड़ा है, you back home. No. Anybody caught drunk and driving should be scared that no, I cannot drive drunk. Why? Because if police catches me, I'm going to be in big trouble. I will have to spend 1 night in jail or 2 nights in jail or pay a very hefty fine. So that's what you need. Advance and enforce your strong countermeasures. Facilitate access to screening, brief interventions and treatment. Now if somebody has gotten into alcohol and is now having alcohol abuse disorder or has become an alcoholic, so now what do you do with that person? You need to bring them back to your support group. Give them methods where they can detox themselves. Enforce bans or comprehensive restrictions on alcohol advertising, sponsorship, promotion. Surrogate advertisement. What is that? That promoting something else instead of that, like Vimal brand. Yeah, Vimal Elaichi. Your top 2 actors in the industry. Ajay Devgan. What sorcery is that? I mean, I don't even know from where to begin. What sorcery is that? What is happening there? You're watching IPL and you have Kingfisher and you have all of these leading brands just broadcasting their things. So who is so stupid that does not understand that Kingfisher is not a soda and it's something else, right? So surrogate advertisement has to be banned at their source. No, there should not be any place or any area where any surrogate advertisement should be allowed. Right? There are 2 kinds of surrogate advertisement. One is very simple, the direct one. Kingfisher ने beer भी बनाई और soda भी बनाया. Second kind of surrogate advertisement क्या है? Will's Lifestyle. Store है Will's Lifestyle का, इतना बड़ा, लोग जाके they buy stuff from there. Will's और क्या बेचता है? Cigarettes. This is another kind of surrogate advertisement कि वो एक बहुत अलग वेंचर में चला गया, फैशन इंडस्ट्री में चला गया, वहाँ से भी रेवेन्यू आया. Right? So, I mean, that is something. And then the last is raise prices on alcohol through excise taxes and pricing policies. That we've been repeatedly saying this, right? So please focus on building a life without alcohol. Have water, nutrients, physical activity and sleep 7 hours every day. It's important. It will help you thrive. It will help you become responsible and better citizens for your country and will ensure कि हमारी इंडिया की productivity यहाँ तक पहुँच रहे. और second number alcohol में नहीं, we become second on world leaders in something else like happiness index. This is very important. Think about something like that. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Do you guys have any questions? Yeah, I'm so sorry. Yes, please. Any questions? मैम एक बात, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं है, हाँ जी. बट जैसे बड़े लोग मतलब से 35 प्लस बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे नॉन में भी पीते हैं. मतलब कब से पीना शुरू किया शायद मैंने नहीं देखा होगा, मुझे नहीं पता. तो हमारा फोकस जस्ट इस एज पे है जो कि नाडा के ज़्यादा जो भी हम लोग 21 to 25 इंक्रीजिंग, तो उन लोगों को कैसे हम लोग रोक सकते हैं या मोटिवेट कर सकते हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती.
adult drinking is an entirely different concept, because you know when you become an adult तो हम उनको सिर्फ थोड़ा सा empower कर सकते हैं, थोड़ा सा educate कर सकते हैं कि भाई थोड़ा सा आराम से be a little at ease, don't over indulge into alcohol, because leaving alcohol सिर्फ उस step पे possible है जब आपने alcohol का addiction शुरू कर दिया है। तो ये जो हमने मॉड्यूल बनाया उसमें हमने एडिक्शन के सारे फेजेस बताए। एडिक्शन कैसे शुरू होता है? फेज 1 से, मैंने आज एक ड्रिंक लिया, कुछ नहीं हुआ, दैट्स ओके, 15 दिन के बाद मैंने एक और ड्रिंक ले लिया, फिर मैं स्टेप 1 से स्टेप 2 में चलेगी, स्टेप 2 से स्टेप 3 में चलेगी। तो अगर एक एडल्ट जो 35-year-old इंसान है उसको अगर अल्कोहल छोड़ना है तो देयर आर ओनली 2 वेज फॉर दैट। वन इज मैं खुद से सोच लूँ कि नाउ हैव यंग किड्स, आई शुड नॉट बी ड्रिंकिंग अल्कोहल, या सेकेंड कि मैं इतनी सीरियस एडिक्शन पे चली गई कि आई एम फोर्स्ड टू लीव अल्कोहल, आई हैव रीच्ड स्टेप 4 एंड स्टेप 5 ऑफ माई एडिक्शन। So obviously that's why we say that early initiation of alcohol नहीं होना चाहिए। जब हम थोड़ा later stage पे alcohol consume करना शुरू करते हैं तो हम लोग alcohol responsibly लेते हैं, because ये research कहती है कि जितना younger आदमी alcohol लेगा उतना ज़्यादा वो binge drink करेगा, and जितना older आदमी alcohol लेगा उतना वो socially ड्रिंक करेगा। सो अब दैट्स डिफरेंट कि एक महीने में किसी कितने सोशल एंगेजमेंट्स हैं। आई कैन हैव 5 सोशल एंगेजमेंट्स इन 1 month, so मैंने 5 सोशल एंगेजमेंट्स में आई हैड प्रॉब्ली हाफ 30 ml और 60 ml, राइट? बट इफ अ यंगर पर्सन इज हैविंग अल्कोहल तो वो सोशली नहीं, दे डोंट इंडल्ज इन, दे हैव बिंज ड्रिंकिंग व्हिच इज अनदर डिफरेंट इशू। बिंज ड्रिंकिंग तो कैन बी सो फेटल दैट अगर किसी ने बिंज ड्रिंक कर लिया तो दे कैन इवन डाई, बिकॉज दैट्स हाउ पॉइजनस, बिकॉज अगर आपकी बॉडी में अल्कोहल पॉइजनिंग हो गई एंड यू गो इनटू स्टेज ऑफ कोमा, सो देन देयर इज नो रिटर्निंग बैक। So you know when you are like at an older age group, so alcohol leaving is possible only by 2 ways, which I think is that one is that they understand it themselves only, और अगर आपको लग रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी रहा है तो उसको वो सपोर्ट सिस्टम देना, उसको बताना कि अब आप एडिक्शन का एक ग्राफ आता है, आप एडिक्शन के ग्राफ के स्टेप 3 पे पहुंच चुके हैं, तो अब आप स्टेप 5 पे ना जाओ, तो यहीं पे ना जस्ट ट्राई टू रिवर्ट बैक। दिस इज हाउ। मैम खराबी तो थोड़ा पीने में भी है। बिल्कुल है। तो जरा सा भी आपने बताया जैसे कि 7 minutes में अल्कोहल बॉडी पे अफेक्ट करता है विद 30 ml ऑफ अल्कोहल एंड इट्स इरिवर्सिबल। यस मैम। और इसके बाद एक चीज और है मैम कि जैसे छोटे बच्चों की हम लोग अगर चाइल्ड की बात कर रहे हैं तो हम लोग कानून बहुत सारे बन रहे हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात भी जिस बारे में कर रहे हैं, तो एक चीज और भी हो सकती है कि हम लोग मतलब स्कूल लेवल पे आफ्टर मुझे लगता है कि 7-8 तक बच्चे काफी बड़े हो जाते हैं, तो इसका पार्ट ऑफ इट शुड बी द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। बिल्कुल, एक चैप्टर कुछ ना कुछ होना चाहिए। has to be। मतलब मैं जितना तक सोचती हूँ ना मैम, हमने जो भी छोटी क्लासेस में पढ़ा है, इतनी स्टोरीज, मैंने अपने पर्सनल बात बता दूँ, आजकल के बच्चे यंग जनरेशन में हमने कुछ नहीं पढ़ा हुआ उतना। हम लोगों ने छोटी छोटी स्टोरीज, जो मॉरल स्टोरीज होती है मैम, एग्जाम में आती थी। आजकल मैंने देखा बच्चों के मॉरल एजुकेशन यूज्ड टू बी अ सब्जेक्ट back when I was also in school। मैंने अपने मेरे एक्चुअली मेरी बेटियां बड़ी हो चुकी हैं, मेरी बेटी ने भी MBA कर चुकी है, बट मैं देखती हूँ कि मॉरल स्टोरीज जो हमने पढ़ी हैं वो हमारे लिए वैल्यूएबल भी है और हमने समझा है, हम समझाते भी हैं। जितनी मेरी कोशिश होती है, मैं पर्सनल लेवल पे तो मैं समझाती हूँ, भले कोई किसी को ये लगता है कि लेक्चर काट रही है, तरीका मतलब कभी कोई तरीके से होता है, कभी कोई तरीके से अकॉर्डिंग टू टाइम या सिचुएशन। बट अगर हम लोग जैसे हमने बहुत सारी कहानियाँ चैप्टर्स में भी पढ़ी हैं, लाइक अगर हम बात करें कि महाभारत की कुछ छोटे छोटे स्टोरीज हमारे सिलेबस में थी, हिंदी में, पंजाबी में, इवन इन इंग्लिश चैप्टर्स आल्सो की, मतलब 8, 9, 10 मेरे ख्याल से। तो मैम अगर इस टाइप से या तो कोई स्टोरी बना के बिल्कुल स्कूल करिकुलम में इन्वॉल्व होना चाहिए। दैट्स व्हाई वन ऑफ द स्कूल स्ट्रैटेजी, जब भी हम अल्कोहल के बारे में बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट स्ट्रैटेजी स्कूल स्ट्रैटेजी होता है मैम कि सबसे पहले स्कूल लेवल पे जाके आप बात जब करो। तक हम चैप्टर में कोई चीज़ पढ़ते हैं ना मैम, वो छोटी क्लास में तो टीचर्स पूरा एक्सप्लेन करते हैं, हर चीज़ समझाते हैं, एक चैप्टर रीडिंग करने के लिए बच्चों को उठाते हैं, रीड करो, इसको रीड करो, तो उससे बहुत कुछ दिमाग में बच्चे के आता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग उस चीज़ को रियलाइज अंदर से करते हैं, कोई भी बच्चा। एक्चुअली स्कूल के करिकुलम में कोई भी चीज़ ऐड करने का मतलब है कि यू हैव टू गेट इट एट द सेंट्रल लेवल, विच इज ईदर द CBSE बोर्ड और द ICSE बोर्ड। आई फील उससे थोड़ा सा ईजियर स्टेप बता रही हूँ, जो क्विकर हो सकता है, टू हैव स्कूल प्रोग्राम्स, जो थोड़ा सा ईजियर एक मेथड है जिसमें आपको किसी से
किसी गवर्नमेंटल एजेंसी से बात नहीं करनी, सीधा 1-to-1 आप स्कूल के पास गए, प्रिंसिपल से बात करी, से वी रिप्रेजेंट दिस ऑर्गेनाइजेशन, we would want to have a session for your children on underage drinking. मैम इस रोड पर आप लोग इसको लिमिटेड स्केल पे कर सकते हैं. I understand, yes, that is one disadvantage of this. I would like to add here, I'm not sure if you heard our director Mr. Mansukh Mandavia ji's speech on GYTS4 when that survey was released. That time he spoke about, although we are talking about alcohol, but I think same goes for Yeah. alcohol and tobacco, that how tobacco education has to be there starting from Exactly. primary level. Exactly. So, and because it is all behavioral, right? So, I agree. unless you ingrain that moral values from your childhood, all of a sudden when you reach adolescence, It's very difficult because in adolescent brain at 15-16 years, it's not, I mean, you cannot imbibe the fact that, do not do this. वो do not to word नहीं आता है समझ 15-16 years में. Has to start way back early. Have to incorporate it at the school level. Absolutely, I बच्चे agree. बहुत टीवी देख के सोशल मीडिया जितना भी है, मेनेस बन गया है. जैसे आपने आप भी बताया अजय देवगन की कौन सी ऐड आती है, मैंने सुना है. जैसे मैंने अगर मैं बच्चों से अपने मतलब जो भी मेरे सामने आते हैं, मैं इस टॉपिक पे बात करती हूँ कि हम लोग टोबैको के अगेंस्ट काम करें, मैं नाटक के साथ वर्क कर रही हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है, तो मैंने जैसे थोड़ी सी बात की, वो तो इलायची है जस्ट, मतलब मुझे नहीं समझ में आता. हमारे राधे सर ने थोड़ा सा हमको बताया था कि बहुत सारी चीजें हैं जिनमें कि टोबैको या निकोटीन इंक्लूड है. नहीं, वो सेल प्रॉब्ली इलायची कर रहे, पर दैट ब्रांड इज नेवर नोन फॉर इलायची. आपने कभी भी जाके इलायची उस ब्रांड की खरीदी है? मैं तो ग्रोसरी शॉप से नॉर्मल इलायची खरीद के लाती हूँ. आई हैव नेवर बॉट दैट ब्रांड इलायची. These are some particles of इलायची, मतलब सीड्स. हाँ, उसको so वो सेल फ्लेवर्ड इलायची अगर सुना है, मैंने देखा नहीं I don't know. personally. मेरा इसमें एक वो भी है Yes, कि please. वैसे मतलब बिकॉज मेरी मम्मा मेरे को मार्केट बेचती है और मुझे पता है इलायची का दाम क्या है. It's so expensive. अकॉर्डिंग टू दैट जो हमें जुबा केसरी में मिल जाता है मतलब इलायची वो बहुत ही सस्ता है. मतलब तो वो इलायची नहीं बेच रहे ना, बताओ क्या है वो. चाहिए हमारे घर में इलायची इज सो एक्सपेंसिव कि माय मदर यूज्ड टू से कि एक ही इलायची डालनी है बस चाय में. दैट्स हाउ एक्सपेंसिव इट इज. So here I would like to highlight that, like, good that you brought up the example of Diageo, the alcohol company. I don't think they are guilty, and because of which they are trying to do the CSR. It is just probably to compensate, or because there are a lot of young volunteers who have been working in the field of alcohol protection and tobacco Yeah. protection, but then get lured by the industries who are initiating in the name of CSR responsibilities. But behind those CSR responsibilities is actually these alcohol companies, Oh, yes. which is basically confusing us, right? Oh, yes. Saying If that Diageo you- has what is- something- are you good or are you bad? Yes. So it's Ma'am, interesting tactics नेस्ले also. बहुत बड़ा ब्रांड है. नेस्ले, रीड अबाउट हाउ नेस्ले इज इन्वॉल्व्ड इनटू so many things which are harmful for us. So if you like talk about surrogate advertisement and talk about Nestle baby products भी बनाते हैं and then Nestle chocolates भी बनाते हैं. So go home and read what all products Nestle makes. Nestle is one of the biggest example of confusing everybody that what they want actually to कोई sell. ध्यान नहीं देता मैम, मैंने भी नहीं दिया एक्चुअली. मतलब कौन सी कंपनी, एक ही कंपनी कितना कुछ क्या क्या दूसरे फील्ड में भी जा सकती है, ये हमने सोचा नहीं. और इन अ वे हम विल्स लाइफस्टाइल का जो बैग लेके मॉल से बाहर निकल रहे हैं, सो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर लाइक प्रमोटिंग देम ओनली. स्कूल लेवल की बात की ना, स्कूल लेवल में स्टडी जो है कि लिमिटेड रह गई है. पहले होता था कि टीचर मतलब उनको काम नहीं होता था, वो पढ़ाते थे, लेक्चर देने से पहले कुछ ना कुछ मोरल एक्टिविटी करवाते थे. यस. बट आजकल ऐसा नहीं. टीचर के सिर पे एक तो स्कूलों में टीचर लिमिटेड रह गए हैं, और दूसरा ये है कि उनको जो अपना सब्जेक्ट और अदर वर्क जो है वो बिल्कुल. आई एग्री. ऑफिस मैं खुद एक एकेडमिशियन हूँ. मैं इनके साथ, ये आधे बच्चे मेरे ही बैठे हैं यहाँ पे, मैं इनके साथ नहीं बात कर पाती बहुत सारे टाइम बिकॉज मुझे अपना टॉपिक खत्म करना है. जैसे कि अदर जो है वो करवा सकते हैं, जैसे कोई एक्टिविटी अदर वेस्ट जैसे नाड़ा हो गया या और कोई तो उस बेस पे हो सकता है. बट अगर आप बोलोगे कि टीचर, एक तो टीचर आजकल काम में बिजी है, अपने लेक्चर नहीं, अगर हम करिकुलम में ऐड करवा दें Yeah, तो curriculum. इजी है. If we get it added into the curriculum, then it's a little easier. Or we have like in moral education में हमने ऐड करा दिया. हाँ. But otherwise yes, थोड़ा सा डिफिकल्ट है. But I think हमें ना सिंगल स्ट्रैटेजी कभी नहीं लेके चलनी चाहिए. मल्टी स्टेप स्ट्रैटेजी होती है. हम अगर हर तरफ से एक
कॉमन प्रॉब्लम को अटैक करेंगे तो ईजियर टू मैनेज. Thank you, ma'am. उसके लिए टाइम. Yes, he has a question, I think, or a comment. I'll just take that. ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन है. फर्स्ट कि मुझे लगता है कि पेरेंटिंग जो है अभी सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, तो उस पर एक क्लियर थॉट आपका मैं जानना चाहता हूँ. पेरेंटिंग पे क्या कितना इन्फ्लुएंस कर रही है पेरेंटिंग. दूसरा, जब पॉलिसी मेकिंग की हम बात करते हैं ना, तो हम बैन करने की बात करते हैं, प्रोहिबिट करने की भी बात करते हैं, और इंडिया में हो भी रखा है. और जहाँ तक रिलीजियन बिहेवियर की अगर बात करें यूथ की, तो जिस स्टेट में हो रखा है वो ज़्यादा रिलीजियस होकर वहाँ पे बच्चे ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं. बिहार है, गुजरात है, ऐसा नहीं है वहाँ नहीं मिल रहा है, और वर्स्ट कंडीशन है और जगह से. क्योंकि बिहार में बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आते रहते हैं, क्योंकि मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ तो मैं बिहार का न्यूज़ ज़्यादा देखता हूँ. तो वहाँ से अभी आते रहते हैं, ऐसे न्यूज़ आते रहते हैं कि कभी 150 कभी 200 लोग एल्कोहल कंज्यूम करने की. अभी दिवाली पे 150 लोग. स्प्यूरियस अल्कोहल. इसलिए एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल इसमें मैं यहीं पे बोलूँगी कि मैं कभी भी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हम कोई भी चीज़ कम्प्लीटली बैन कर दें. मेरा ये मानना है कि अगर अल्कोहल भी है तो मैं अगर आप लोग को ये सिखा पाई ना कि तुमने साइन करना है अभी तो क्या काम दे दिया. कि अगर मुझे ये आपको मैं सिखा पाई कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है और कौन सी गलत है, तो ज़्यादा बेटर होगा. राधा वो मैंने चीज़ ही हटा दी, बिकॉज मैंने कोई चीज़ हटा दी तो क्यूरोसिटी तो रहेगी ना. पेरेंटिंग वाली बात, आई थिंक वी आर गेटिंग लेट. यू एंड आई कैन टॉक आफ्टर द सेशन अ लिटिल, यू नो, और पर्सनल, बिकॉज आई थिंक यू हैव लाइक. I'm very sorry, ma'am. No, I Yeah. completely understand. No, I think we should have a discussion after this because once towards the end we do have tea for networking again. So please do continue this discussion. Now I request Ravi ji to kindly give us a review and feedback of how our youth parliament session was in the morning.